Hey guys, hello. A very good evening to all of you. I think my voice is better without the headphones. I'll just take it off. I think I've got this feedback, especially in live sessions and live classes. Great. So, okay. So let's wait for 30 seconds over here. Probably then we can look into it. Okay. Till then, what I'll do is I'll open the Power BI. Today we're going to take up the next stage, which is again the next stage of AI driven. Sorry, AI driven visuals. So I think we discussed few visuals yesterday, right? And I think anybody who joins us with hey, hi Narinder, hello, hi, and yeah. So I think we were doing this one. Right, and this is the file. This is the one in which we scrape the data from internet, and from Flipkart we took it up. Okay, just a minute. One final thing, and then we get going. Okay, right. So I think हम लोगों ने काफी सारे देख लिए जैसे की इन्फ्लुएंसर देखा था हमने. We looked at Q&A over here. Okay, it's running. All right. So we saw Q&A over here. We saw scatter plot, and we understood what do you mean by Q&A. What how Q&A helps us. Right. Scatter plot we have done. Okay. And now it's time for us to move on to the next part, which is this thing, decomposition tree. And now I'll have to see whether we have uh, decomposition tree over here, because I don't think we'll have something like revenue. All set, we had done almost everything that we need to do in getting the data in place. For example, if you look at ratings, reviews, battery, brand, camera, all these are absolutely in place, and there is no doubt over here that what kind of uh, what kind of the variable it is, what kind of feature it is, and how will it change. Okay, now here I am looking for something which is on a sum basis. Okay, and I want to use that this thing. Let me see whether it works on price category or not. So what I'll do is I'll copy one of the key influencers. I'll just copy it and put it on this page over here. In fact, I'll delete the page, right? Because we know that we should duplicate the pages so that uh, the formatting remains. So मैं इस चार्ट को ले लेता हूँ. इस चार्ट में मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को मैं एक डिकम्पोजिशन ट्री में कन्वर्ट कर देता हूँ. ओके, एंड व्हाट यू मीन बाय डिकम्पोजिशन ट्री, इसी को देखेंगे आज. ओके, सो एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस, ठीक है, एंड प्राइस कैटेगरी एक्सप्लेन बाय प्राइस कैटेगरी. व्हाट आई डू इज, गाइस एक काम करते हैं, इसको भी डिलीट करता हूं मैं. एंड क्या होता है ना, आई टेक की इन्फ्लुएंसर ओवर हियर, इसको कॉपी करता हूं, तो इसके सारे ये जो चीज है ना, इसका सारा का सारा ये जो चीज है ना, ये ऑन ऑल द वेरिएबल्स दैट आई पुट इन ओवर हियर, ये कॉपी हो जाएगा. और इसके ऊपर क्लिक करके देन यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट एआई ड्रिवन विजुअल व्हिच इज डिकम्पोजिशन ट्री. ओके, तो अब जैसे डिकम्पोजिशन ट्री में आप ने इसको करा है, एंड यहाँ पर टूल टिप्स दे रहा है ये ज्यादातर तो. बट इफ आई ट्राई एंड मूव इट अप ओवर हियर, मेरे को टूल टिप्स नहीं चाहिए भाई. राइट, आई थिंक आई हैव टू मूव ऑन टू दिस. राइट, मैं सारे आई डोंट नो क्यों पावर बीए ने ऐसा समझा कि इन वेरिएबल्स को नीचे डाल देना चाहिए, तो उसने सारे सारे वेरिएबल्स को ना टूल टिप में डाल दिया. अभी हमने टूल टिप देखा ही नहीं क्या होता है, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट राइट नाउ. ओके, नाउ इन सारे वेरिएबल्स को मैं यहां डाल देता हूं.
right? So all the variables that I wanted to show is over here now. Okay, now कूल टूल टिप्स में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ रेटिंग्स को भी एनालाइज नहीं करिए, आप एक काम करिए, आप ऑफर प्राइस को एनालाइज कर लो। सम ऑफ ऑफर प्राइस आ रहा है यहाँ पर, सम ऑफ ऑफर प्राइस, और आई शुड से एवरेज ऑफर प्राइस करता हूँ इसको मैं, विल गो फॉर एवरेज ऑफर प्राइस। ओके, अब देखिए डिकम्पोजिशन ट्री क्या कर रहा है, इट्स बेसिकली डिकम्पोजिंग द एंटायर थिंग यूजिंग द नंबर ओवर देयर। ओके, cool. So if I just click on this plus, right, प्लस इंडिकेट्स दैट कि आगे आने वाले कौन से इससे कौन से वेरिएबल से आप इसको एक्सपांड करना चाहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करा और लेट्स से आई वांट टू गो फॉर प्रोडक्ट कलर, देखिए अब मैंने कौन सा वेरिएबल लेकर चला है, मैं बोल रहा हूँ एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस। सो आई विल स्टार्ट विथ एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस। नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग विथ एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस, देन इन दैट केस ये एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस का ही बाइफर्केशन देता जाएगा, ये एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस का ही बाइफर्केशन देता जाएगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस प्लस एंड इफ आई गो फॉर दिस, आई विल गो फॉर रैम ओवर हियर। अब जैसे मैं रैम पे क्लिक करता हूं, राइट, सो अच्छा बहुत सारे ब्लैंक्स है भाई यहाँ पर, तो इन दैट केस रैम में बहुत सारे ब्लैंक्स थे ना, तो एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ। आई थिंक इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ ब्लैंक्स ओवर हियर। लेट मी गो फॉर कैमरा फ्रंट। अब ये बोल रहा है कि जो भी एवरेज प्राइस है आपका, सबसे ज्यादा एवरेज प्राइस कहां पर आया जब फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का था। ओके, एंड इट्स 10 मेगापिक्सल, दिस इज द फ्रंट कैमरा ओवर हियर, राइट। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उससे थोड़ी सी नीचे की एवरेज प्राइस है। एंड ब्लैंक को तो हम मान लीजिए इग्नोर ही करते हैं। लेट मी एक्सक्लूड दिस ओनली, आई राइट क्लिक एंड एक्सक्लूड दैट। ओके, अब यहां पर हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इन दिस डिकम्पोजिशन ट्री, अगेन इट्स एन एआई ड्रिवन विजुअल व्हिच पावर बीआई हैज डेवलप्ड, राइट। यू कैन ऑलवेज सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप जाएंगे इंसर्ट में, तो एआई ड्रिवन विजुअल में डिकम्पोजिशन ट्री हमारा एक है ना। अब ये डिकम्पोजिशन ट्री क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन ट्री मैंने बोला यार ये एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस को आप ये करिए। ओके, आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई विल जस्ट शेयर दी स्क्रीन। आई थिंक स्क्रीन शेयर किसी वजह से बंद हो गया था, आई एम सो सॉरी। एक काम करता हूं फिर मैं, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल रीडू दी चार्ट, है ना। मैं पूरा चार्ट फिर से बनाता हूं, देन आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू गाइस, राइट। एनीवेज ज्यादा कुछ करा नहीं हम लोगों ने, हमने क्या करा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस एंड प्रोडक्ट कलर, स्क्रीन डिस्प्ले साइज, ये जो हमने की इन्फ्लुएंसर में डाला हुआ था ना यहाँ पर, whatever is done in key influencer, की influencers में हमने जो variables डाले हुए थे की influencers करने के लिए, की influence, you know, we are trying to find out that क्या क्या offer price को affect करता है, वो influencers, वही सारे variables मैंने यहाँ ले लिए और मैंने इसको decomposition plot में डाल दिया। अब decomposition plot क्या कर रहा है यहाँ पर, average of offer price ले रहा है। Now average of offer price is nothing but, you know, if you look at it, एवरेज ऑफ ऑफर प्राइस इज द टोटलिटी हियर। अब मैं जब इसको प्लस पे क्लिक करूंगा और बोलूंगा कि इन सारे वेरिएबल्स में किसी एक के हिसाब से इसको एक्सपांड कर दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपांड करता हूं इसको स्क्रीन डिस्प्ले टाइप के हिसाब से, देन इन दैट केस सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले जो है उसकी एवरेज प्राइस सबसे ज्यादा है। All the Super Retina XDR display kind of phones has 63,899 as their average price. Full HD Plus का average price है 18,579 and HD Plus is 11,599 and then उसके नीचे की कैटेगरी शायद ब्लैंक है, I don't know, स्क्रीन डिस्प्ले टाइप मुझे यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, बट आई थिंक इट वुड बी ब्लैंक, देन 10,999। तो ये काम करता हूँ, इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए भी नहीं है। सो आई कैन नाउ सी दिस दैट अगर मैं एवरेज ऑफर प्राइस 22,239 मेंटेन कर रहा हूं सारे सेल फोन्स की, तो सुपर रेटिना का अकेला ये एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा हाई एवरेज पर है, देन फुल एचडी प्लस 18,579 पर, एचडी प्लस यहाँ पर। अब अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है ये सुपर रेटिना एक्सडीआर जो है इसके अंदर अगर मैं कैमरा फ्रंट देखूं, इसमें अंदर कैमरा फ्रंट एक ही रहेगा, है ना, आई थिंक एक ही है मेरे ख्याल से ये। व्हाट आई विल डू इज देन इन दैट केस एक्सक्लूड दिस, मैं आता हूं एच डी प्लस पे, है ना, वेलकम टू एच डी प्लस। अब देखिए एच डी प्लस में अगर मैं आता हूं, मेरे को ये देखना है कि एच डी प्लस में आगे क्या हो रहा है और फुल एच डी प्लस में आगे क्या हो रहा है। अब फुल एच डी प्लस में इफ आई क्लिक ऑन दिस आई गो फॉर, आई थिंक रियर कैमरा 2 के ऊपर काफी बातें हो रही थी राइट लास्ट टाइम, सो आई जस्ट क्लिक ऑन रियर कैमरा 2
एंड रियर कैमरा 2 में मैंने देखा कि यार ये 18,597 का एवरेज तो मेंटेन कर रहा है फुल एचडी, लेकिन फुल एचडी फोन्स में कुछ फोन्स है जो 12 मेगापिक्सल दे रहे हैं रियर कैमरा 2, कुछ 13 मेगापिक्सल दे रहे हैं रियर कैमरा 2, और कुछ 8 मेगापिक्सल दे रहा है रियर कैमरा 2, एंड समबडी इज गिविंग मी जस्ट 2 मेगापिक्सल ओवर हियर। सो यहां पर मैंने देखा कि जो 12 और 12 मेगापिक्सल वाला जो है उसका एवरेज प्राइस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 13 मेगापिक्सल। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर 13 वाले की तो प्राइस ज्यादा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ रियर कैमरा पे डिपेंड नहीं कर रहा है प्राइस, प्राइस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये दिख रहा है मुझे कि फुल एच डी प्लस की एवरेज को अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो एवरेज प्राइस, एवरेज ऑफर प्राइस ऑफ ऑल द फोन्स विद रियर कैमरा 2 एज 12 मेगापिक्सल विल कम आउट टू बी इक्वल टू 40,000, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज करते जा रहा है आपके पूरे के पूरे फिगर को, यहां पर इट्स बेसिकली डिकम्पोजिंग इट। लेट मी स्टार्ट बाय टेकिंग जहां पर थोड़ा सा क्या ना ज्यादा स्कोप पड़ेगा। लेट मी प्लस दिस एंड आई गो फॉर समथिंग लाइक रोम। अच्छा, रोम भी दो ही टाइप के हैं भाई, 128 एंड 256। वैसे वो भी समझा जा सकता है अगर मैंने यहाँ पर रोम के हिसाब से करा इसको, तो आई कैन सी दैट 128 रोम वाले का एवरेज प्राइस है 22,502 एंड 256 का एवरेज प्राइस है 20,999। मतलब रोम जबरदस्ती बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 128 रैंडम एक्सेस, सॉरी रैंडम ओवरऑल मेमोरी इज वेरी मच सफिशिएंट ओवर हियर, राइट। अब मैं अगर 128 के रोम वाले सारे सेल फोन्स को स्टडी करना चाहता हूं, ओके, इफ आई वांट टू स्टडी ऑल दी सेल फोन्स इन 128 रोम ओवर हियर, आई विल क्लिक ऑन दिस, और यहां पर मैं इसको और एक और वेरिएबल लेकर आगे बढ़ा सकता हूं। ओके, लेट्स से प्रोडक्ट कलर, मैं देखता हूं 128 में प्रोडक्ट कलर में क्या सीन बन रहा है। और प्रोडक्ट कलर में गया मैं, तो मैं देख रहा हूं कि पिंक, ब्लैक, ब्लू, मिडनाइट, ग्रेफाइट, आई थिंक सारे के सारे अलग ही कलर है यार यहाँ पर, है ना। ये ऑल दी कलर्स आर डिफरेंट, देन इन दैट केस कलर्स के साथ लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी इंसाइट नहीं मिलेगा वहां पर। हाँ, लेकिन मैं रेटिंग के हिसाब से जा सकता हूं। अगर मैं रेटिंग पे गया तो 128 रोम जीबी रोम वाले सारे के सारे सेल फोन्स अगर मैं उनको इकट्ठा करता हूं, ओके, then in that case I can see that the rating of 4.6 is maintaining an average of 63,899. The rating of 4.3 is maintaining an average of 22,570. Rating of 4.5 is maintaining an average of 17,999, isn't it? Yeah. Just a minute please. या सो यहां से मैं देख रहा हूं कि 128 जीबी रोम वाले सारे सेल फोन्स का बाइफर्केशन क्या है यहां पर। ओके, वी कैन डू द सेम फॉर 256 एज वेल। यही चीज 256 के लिए भी करो। 256 पे क्लिक करूंगा तो ये तीन चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, 4.5 एंड 2499, 24,999, then we have 4.3, 18,999, 16,999. These are all nothing but these are the average price of phones with rating this much. That is, although हमारे पास बहुत ज्यादा तगड़ा डेटा यहाँ पर है नहीं, लेकिन जितना भी डेटा उसके हिसाब से हम इसको की आई कैन कीप ऑन डिकम्पोजिंग इट ओवर हियर। ओके, यू नो व्हाट, मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक वी शुड टेक अप अनदर डेटा ओवर हियर फॉर स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग दिस वन, है ना। तो मैं इसमें डेटा ले लेता हूँ, बाद में भले ही वो डेटा डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डेटा सिर्फ यहीं पर रहे। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ होम पे, मैं गेट डेटा करता हूँ, एंड आई टेक अप एन एक्सेल वर्कबुक ओवर हियर, and do I have sample superstore? I think coffee store है मेरे पास, मैं coffee store database ले लेता हूँ। I think अच्छा database है मेरे पास। We'll take this one, okay? Now इसको सीधा load ही करते हैं, we don't have to worry about anything else. So I'll just click on sheet over here and say that load. Let's load it up, है ना। Now if I just close this, let me close this, all of them, okay, and I'll use the sheet one, and I might rename this as well। एक काम करते हैं, पहले तो rename करते हैं, because this is coffee data, coffee store, I'll call it coffee underscore store, है ना। नहीं, मेरा coffee underscore store हो गया, क्या हो गया भाई, rename क्यों नहीं हुआ, एक मिनट।
कॉफी अंडरस्कोर स्टोर, एंटर। एंटर मारने पर होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक कॉफी अंडरस्कोर एंटर, यू हैव टू प्रेस एंटर ओवर देयर एंड देन यू विल सी दैट कॉफी स्टोर यहाँ मेरे पास ऊपर आ गया। आई हैव लॉट ऑफ एरिया कोड, बजट, सीओजीस, बजट मार्जिन। अच्छा, यहाँ पर शायद मेरे पास ना वो डेटा भी आ रहा है। वी हैव सीओजीएस, मार्केट, मार्केट क्या है भाई, मार्केट साइज, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, सेल, स्टेट। स्टेट इज अ गुड डेटा फॉर मी, राइट। मैं इसके इसके बारे में एक बात करूंगा स्टेट के ऊपर। टोटल एक्सपेंसेस, टाइप, इन सब के ऊपर आई जस्ट हैव अ वर्ड रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ गाइस, try and understand that if I just look into this and budget, COGS, budget margin, ये सारी चीजें हैं, इस पर बाद में आते हैं। पहले डेटा क्या है, मैं सिंपल सा एक डेटा ले लेता हूँ, जैसे टोटल सेल्स ले लेता हूँ। और टोटल सेल्स को मुझे अच्छा, ये मैंने अलग जगह पर लिया है क्या, आई एम सॉरी। मैं ये डिकम्पोजिशन ट्री में टोटल सेल्स लेता हूँ। आई थिंक दिस विल हेल्प अस स्लाइटली अंडरस्टैंड दिस स्लाइटली बेटर। अब मैं सेल्स को प्रोडक्ट के हिसाब से समझना चाहता हूँ, प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से समझना चाहता हूँ, राइट, मार्केट साइज के हिसाब से समझना चाहता हूँ। इनफैक्ट आई जस्ट कीप ऑन क्लिकिंग, मार्केट मार्जिन की जरूरत नहीं है आई थिंक। देन वी हैव टाइप के हिसाब से समझना चाहते हैं, स्टेट के हिसाब से समझना चाहते हैं, राइट। एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इज मार्केटिंग, सो आई जस्ट टेक इट अप। मार्केटिंग बजट होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक दिस इज द मार्केटिंग बजट। इसके हिसाब से, ओहो, यहाँ पर है भाई, इसके हिसाब से मार्केटिंग को समझना चाहता हूं मैं। देन इन दैट केस रेस्ट ऑफ देम आर एरिया कोड के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो ये सारे वेरिएबल मैंने यहां पर डाले हुए हैं। इन सारे वेरिएबल के हिसाब से, राइट, इन सारे वेरिएबल्स के हिसाब से आई वांट टू अंडरस्टैंड माय टोटल सेल्स। अब ये थोड़ा बेटर डेटा हुआ, या आई विल डेफिनेटली शेयर दी डेटा, डोंट वरी अबाउट इट। डेटा की चिंता मत करिए, डेटा सारा आप तक पहुंच जाएगा। आई थिंक वंस आई एम डन विद दिस, ये एक बार मैं खत्म कर दूंगा ना, तो खत्म करने के बाद आई विल स्टार्ट कमेंट बॉक्स पे आई जस्ट पुट अप द डेटा ओवर देयर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल, राइट। सो सम ऑफ सेल्स, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ट्री क्या कर रहा है। डिकम्पोजिशन ट्री पे जब मैंने क्लिक करा और यहां बोला कि अब ये हाई वैल्यू लो वैल्यू को 2 मिनट के लिए इग्नोर करिए, आई विल टेल यू व्हाट अबाउट दिस। प्रोडक्ट पे अगर मैंने क्लिक करा तो मतलब मैं ये देख रहा हूं कि अब टोटल सेल्स मेरा कितना है, 819811 डॉलर्स, ऑफ कोर्स इट्स अ स्टोर। 819811 ये मेरा क्या है, टोटल सेल्स है। अब अगर मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा यहां पर, तो क्या हो गया, इसने प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्स का बाइफरकेशन दिखा दिया है। इसने प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्स का बाइफरकेशन दिखा दिया, दैट इज कोलंबियन इज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच इज सेलिंग द हाईएस्ट। प्रोडक्ट पे भी जाने से अच्छा सबसे पहले मैं आता हूं प्रोडक्ट टाइप पर ना, इट मेक्स सेंस इजंट इट। सो आई विल से एक्सप्रेसो, कॉफी, हर्बल टी एंड टी। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि सम ऑफ सेल्स अगर मेरे को देखना है, अगर मेरे को टोटल सेल्स देखना है अपना पूरा कॉफी स्टोर का, और 819811 मेरा क्या टोटल सेल्स आ रहा है, तो उसमें से एस्प्रेसो इज कंट्रीब्यूटिंग 222996, मतलब तकरीबन 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तकरीबन उतना ही कॉफी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर्बल भी उतना ही है, टी थोड़ा उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। सो आई थिंक कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्प्रेसो, कॉफी एंड हर्बल टी is close to each other, which espresso winning the bet over here, right? टी को थोड़ा उठाना है, so my sales is majorly driven by espresso and coffee, I can see that. अब espresso is a product type, इसमें भी कौन सा प्रोडक्ट है जो मुझे हाई सेल्स दे रहा है, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन एंड क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट। नाउ इट सेज दैट भाई सबसे ज्यादा सेल्स में एस्प्रेसो में, सी टोटल में एक कॉफी स्टोर, एज द नेम सजेस्ट आई एम अ कॉफी स्टोर, लेट्स से सीसीडी। ओके, सीसीडी में अगर मैं हूं और एस्प्रेसो यहां पर अगर आपका इज दैट पर्टिकुलर दिस थिंग, एस्प्रेसो इज द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट विच इज द बेस्ट वन, ये सब सेल्स के हिसाब से बेस्ट है। तो एस्प्रेसो और कॉफी मेरा स्टोर का सेल्स जो है ना वो ड्राइव कर रहे हैं। अब एस्प्रेसो में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, कौन सा तगड़ा प्रोडक्ट है जो काम का है, वो मुझे यहां दिख रहा है। आई कैन सी दैट इन एस्प्रेसो देयर इज कैफे मोचा एंड डीकैफ एस्प्रेसो, यही दोनों प्रोडक्ट हैं जो दोनों मिलके आई थिंक 84,000 और 78,000 मेक्स इट लाइक 162,000, 222 में से 162,000, तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, कहीं ज्यादा, आधे से कहीं ज्यादा है ये। उसके बाद नीचे के दो प्रोडक्ट आते हैं, कॉफी लाते, कैफे लाते एंड रेगुलर एक्सप्रेसो ओवर हियर। अब कॉफी मोचा ये देखना चाहता हूं कि कौन से स्टेट में ज्यादा सेल हो रहा है, राइट। लेट मी सी, इज इट लाइक
coffee mocha, ठीक है, I got cafe mocha as the highest selling product inside espresso product type. But if I click on this, मैं एक काम करता हूं, मैं स्टेट पे आता हूं, और स्टेट पे आने से अच्छा अभी फिलहाल मैं मार्केट पे आता हूं. Is it very, is the sales uniform across market? Then in that case, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई. सेल्स सेंट्रल में ज्यादा है, वेस्ट में कम है, ईस्ट में कम है, साउथ में ज्यादा. मतलब सेंट्रल जोन में कैफे मोचा इज अ हिट प्रोडक्ट, whereas cafe mocha is not that a hit product on west, east and southern part of the country. So सेंट्रल पे, मतलब मेरे को यहां से समझ में आता है कि भी कैफे मोचा अच्छा कर रहा है सेंट्रल, ठीक है. एट वेस्ट, ईस्ट और साउथ में अगर मैं बढ़ा दूं, क्योंकि प्रोडक्ट ने प्रॉमिसिंग फीचर्स दिखाए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आई कैन इजीली सी दैट सेंट्रल में उसने काफी अच्छा बिजनेस करके दिया. ओके, नाउ इफ आई क्लिक ऑन डीकैफ एक्सप्रेसो, just one guys, just 1 minute please, sorry there is a bit of disturbance, just a minute. Yeah, guys, apologies for that. So sorry for that disturbance. It happens at times. Okay. So अब मैं decaf का यही चीज अगर मैं decaf के लिए देखना चाहता हूँ, if I want to see for decaf, then I can see that okay, decaf is actually doing better in west and central में भी ठीक ठाक कर रहा है, southern and eastern portion में is not doing well. So if I look at the top two products, cafe mocha and espresso, I can see cafe mocha is doing very well in central. West में उतना अच्छा नहीं कर रहा है, whereas if I compare, decaf espresso, I can see west and central में अच्छा कर रहा है. So if I want to and take it further, I probably will say that cafe mocha central में is doing well. Central invest appears to be a connection, क्योंकि यहाँ पर decaf espresso consume करने वाले बहुत है, तो I think I'll try and promote cafe mocha in west as well. Something like this can be taken up. Okay, so यहाँ पर मेरे को decomposition कर करके दिखाते जा रही है. Now, if I want to understand it further, let's say central region में मैं अब जैसे यहाँ पर total sum of sales is 81,9811, these $1. Espresso as a product is doing the best, out of which espresso as a product type is doing well, out of which cafe mocha is the product which is doing the best of all of them and is doing well in central. So central, cafe mocha, espresso in sales, this comes out to be a connection. I can see 819, 811 में 35,000. In a way you can say out of 819, 35 is contributed alone by this product from central. Not a bad thing. Okay, now I can see it for coffee as well. If I click on coffee, the same bifurcation will happen for coffee. If I want to understand where am I actually leading with my coffee, sorry, coffee had only three products: Colombian, decaf Irish cream and Amaretto. Okay, if I'm pronouncing it right? हमारे लिए तो coffee एक ही होती है, very simple, right? We live in Bangalore. For us, it's filter coffee. Okay, but there are different different ways of making coffee, drinking coffee. So in that case, coffee and Colombian is that particular product in coffee which is you know doing a very good job. In fact, it's the sales generated by Colombian is almost, in fact, more than twice of decaf Irish cream. Okay, and Amaretto, I haven't heard of this name, but this is doing slightly, it's okay-ish over here. Okay, अब देखिए कोलंबियन में अगर मैं क्लिक करता हूं, I can see that which particular market are you doing the best. I can see that east, west, central and south. We can see Colombian coffee is doing very well in east. मैं देखिए यहाँ पर मुझे कुछ कुछ चीजें तो समझ में आती जा रही है. एस्प्रेसो as a product is very well established in central and western regions, whereas coffee as a product, which is also a hit product, and the best product of coffee is actually in the east and the west region. The coffee is east and west region. West region तो चलो फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, but east region. So in east region, I found coffee is dominating. I found in the western and the other region, west और कौन सा था, central region, central and western region में क्या हो रहा है, central and western region में espresso as a product is booming. All these kind of analysis can be done using this one. Okay.
एंड नॉट ओनली दिस, आई कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग, जब तक मेरे को देखना है तब तक मैं देखते जाऊंगा इसको। ईस्ट में टाइप कौन कौन सा है, अच्छा ये टाइप को मैं एक काम करता हूँ, I think I'll start with the type over here, right? So I'll just click on this. Wait. Sorry. Let me see whether you can move type over here. Type को हम यहाँ move कर सकते हैं क्या? Let me see this. Can I move this? Okay. Now, अब एक काम करते हैं, let's do one thing. I think I've locked. Okay, unlock ही करता हूँ मैं यहाँ पर. I do not want to lock it right now. This is basically, locking it. Right, all of them are unlocked over here. By locking, I think I'll now nobody's going to delete that, nobody's going to take it back over there. All that kind of stuff can be done. Okay. Now, if I look at market, इसको close करता हूं मैं. I'll come back over here and I can, if I'm analyzing sum of sales, I can come back over here, click on this drop down, go to average and see that now I want to, I want to go for, you know average of sales, and let's go by something called as high value. High value simply means that what are the high values over here, that is, uh, which of the variables that you selected so far, of these value, which is giving me the highest high value, highest value. Okay, so it comes out to be marketing. It'll not make a lot of sense at this point of time, so I'll close this. I'll say that okay, now we can see that of average sales of this, major market is doing 249 and small market is doing, market wise bifurcation ho gaya, fair enough. If I click on this and if I go for high value, I can see that area code 917 is doing a very good job. But again, let me not get to area code right now. I want to go for something else. Right. Now it's going for product. Okay. So in major market where the average sales is 249, I can see that the regular espresso is generating the highest average sales, followed by Colombian coffee, followed by cafe latte espresso, followed by decaf espresso. So point is top three products ke hisab se in the major market, if I look at the average sales per order, if I look at average sales per order, regular espresso, Colombian, and cafe latte are doing a fantastic job. In fact, these are, and decaf espresso as well, are actually driving your average in the major market. ये चीज मैं स्मॉल मार्केट पे क्लिक करता हूं तो आई कैन सी दैट दिस इज व्हाट इज द केस फॉर स्मॉल मार्केट. अब लोवा, नेवाडा, these are nothing but some or the other kind of products, probably in the other product types that we haven't seen yet. Okay, इस तरह से I can definitely, okay, now in small market, I'm so sorry, it's not product. मेजर मार्केट में उसने प्रोडक्ट के हिसाब से बाइफर्केशन करा है, बट स्मॉल मार्केट में बाइफर्केशन उसने करा है स्टेट के हिसाब से, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट एवरेज जनरेटिंग स्टेट. So we can see that in small market, the state-wise average generation is slightly better. So we can see Oklahoma, Washington, Nevada, Iowa, right? These are all nothing but states. Let's say I want to understand Nevada further. So if I click on Nevada and go for high value, I can see that the Darjeeling tea, the Earl Grey, lemon tea, and chamomile, if I'm pronouncing it correctly, mint tea, Colombian coffee, and decaf Irish cream espresso are the products which are doing well. In fact, espresso to बहुत कम average दे रहा है. In fact, if I look at the entire average, I can see mint, chamomile, and lemon, Earl Grey, and Darjeeling are the top five over here. Okay. If I click on this and Darjeeling में high value करता हूँ, they'll be equal to West, right? And if I go for, let's say, low value, then of the three, which one is the low value? So it says that, okay, in Darjeeling, the West is the lowest value over here. In fact, that's the only type which is left. So we can probably stop our decomposition over here. But you get a gist of how good, how solid this, entire, sorry, yeah, how solid this entire tool is. Can you understand this? Because I can decompose, I can keep on decomposing, and not only I'm decomposing sales, I'm decomposing sum of sales, I'm decomposing average of sales. Not only I can take the the sum and the average of the number with which we are decomposing, we can also take it on the market size as well. Can we say this?
I mean, market size, and if I look at state, market, product, type, in fact, these are all the subjective ones now. Fair enough. Right. Similarly, I can, I can understand profit as well. Let's get rid of sum of sales. I'll put profit over here. Right. If I just replace it, you can see that, I mean, it's just giving me the bifurcation of the profit. Sum of profit, major market. Okay. Major market, regular, decaf, coffee, and so on like this. वही bifurcation है आपका. You're looking at sum of profit, which one of them is the most profitable. We can see major market is better than small market. We can see in the major market, regular is better than decaf, is giving more profit over here. In regular, we can see coffee is giving me fantastic profit. Okay, right? Now, if I click on coffee, click on this plus high value over here, right? Colombian and Amaretto are the two types of coffee over here. So 441131. Okay, cool guys. So this is what is decomposition tree. You can decompose anything. You can study anything. I mean, only this might drive another half an hour of fruitful discussion in the conference room. Simple as that, right? Once we have a report like this. Okay. So yeah, this is basically these are the some of the uh, some of just a minute, let me see it. Okay, some of the AI driven tools that I wanted to talk about. These are all the AI driven tools over here, and now we can easily put them at one place, and we can see the decomposition anywhere we want to go for. Okay, right. Now the final one is something called as narrative. Narrative actually is going to give you the narrative. Right, इसको click करता हूं मैं यहाँ पर. If I click on narrative, it's going to convert this. Oh, this is where we need to. कोई समरीज नहीं मिली मुझे यहाँ पर. फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है. सी व्हाट हैपेंस इज narrative as a AI tool is going to generate the narrative out of the given figure. Let's say if I take up a figure over here, just a minute. If I go for this, right? If I take up a, let's say, yeah, let me take the product prices over here. Control C. Let me try and put it up over here. Yeah. Now, if I convert this into narrative, okay, ठीक है. There are certain cases in which it's not fitting over here, so probably this can be ignored for this. Okay, we probably can ignore for this. Just a minute, guys. I'll take care of the environment. Just a minute, please. गेट क्या लगा लो, खाना खाए जा रही. Yeah, so sorry for that. Now, what I was saying was that I can just remove this over here. Okay. And well, at this point of time, let's not worry about that. Narrative is something which is going to convert, the entire diagram into chart based stuff, or sorry, into text based stuff. That is, it can write the narrative for you. It can actually find out 4 to 5 good points over there, and it can summarize the data, given that the data is good enough to be summarized. Okay, that's the case over here. Not a lot of people use it very often, but at times it might be effective. Okay, right. Now, this is majorly all the tools that I wanted to discuss so far, except for one. Except for one, I think I wanted to see one more, and I wanted you guys to have a look at that as well. But I think I'll not, as I've used this particular page for decomposition tree, I'll go for this one as a decomposition. I'll call it decomposition. I'll use another page. एक और पेज यूज करते हैं, and there is something which is brilliant over here. एक एकदम बढ़िया चीज है, और वो, अच्छा मैंने फिर से क्या कर दिया, नया पेज खोल दिया ना. मैं ये एक काम करता हूँ, इसी को
डुप्लीकेट करता हूं. Why should we duplicate a page? Because the formatting carries, है ना. So उसकी formatting नहीं, उससे related उसमें जो भी ग्राफ बने सबकी formatting आ जाएगी. और यहां पर मैं दो ग्राफ डिस्कस करता हूं. Although ये AI driven नहीं है, although AI बहुत ज्यादा AI driven नहीं है, लेकिन कुछ कम भी नहीं है. They are very very effective charts over here, right? So मैं यहां पर क्या करता हूं, दो चार्ट ऐसे ही बना के छोड़ता हूं. कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहां पर दोनों चार्ट रख देता हूं. ओके, I'll put both the charts over here. राइट. ओके, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग. ओके, एंड आई कन्वर्ट दिस इनटू समथिंग कॉल्ड एज मैप चार्ट. लेट मी स्टार्ट विद द फील्ड मैप फर्स्ट. फील्ड मैप लेता हूं. दो मैप है यहां पर, एक फील्ड मैप है और दूसरा मैप है ना. Now field map में let's try and find out that what do we put over here in field map. एक चीज है लोकेशन. लोकेशन आपको डालेंगे हम स्टेट में. ओके, इस पे आने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता था. लास्ट में हमें कोई जियोस्पेटिकल वेरिएबल नहीं मिला था कल, लेकिन यहां पर हमें दो जियोस्पेटिकल वेरिएबल दिख रहा है. एक मेरा स्टेट दिख रहा है और दूसरा मेरे को मार्केट दिख रहा है. लेट मी ट्राई एंड डू दिस. लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल. लेट मी रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल ओवर हियर, है ना. और मैं यहां पर एक काम करता हूं, देखता हूं मार्केट क्या है. मार्केट का क्या मतलब है, मार्केट मतलब हाँ, सेंट्रल ईस्ट साउथ और वेस्ट. ठीक है, ये मार्केट है भाई मेरा. एंड आई थिंक मार्केट साइज इज मेजर एंड माइनर. फेयर इनफ, राइट. दैट इज, इट्स ओके देन. इन दैट केस स्टेट करके एक वेरिएबल है मेरा, विच इज अ जियोस्पेटिकल वेरिएबल. अब ये जियोस्पेटिकल वेरिएबल का मतलब क्या है, जब मैं डेटा, जब मैं इस कॉलम पे क्लिक करूंगा, कल ही हमने कॉलम टूल्स देखे. ओके, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, I can click on uncategorized over here, or we can see that I can click on state or province. Just click on state or province. Using this, you tell Power BI that this is actually a state. ये actually क्या है, एक state है. So treat it like a state over here. Okay. Now, right, so I'll just keep it to state over here. Now using this, I can take this state. अब मैं टेबल नहीं लेता. I'll go to this particular chart which is my map chart, field map, और मैं state को ले जाता हूं location में. Using this, it's going to find out the location of the states which you're talking about. Okay, then उसके बाद I can come to legend. In fact, okay, legend में I'll just put up what I want to see. For example, let's say I want to put up, no, sales will be very pretty much over here. Let me go for market as the legend over here. Legend means bifurcation of all these states. As you can see, if you look at this field map, we can see that the states which are filled red are nothing but your western states, southern states. Then we can see there's southern states over here. Then we have eastern states, and then we have central states, which means that which these are the states in which our company is doing business. Right now we can just look into this, and as of now we can only confirm this much in field map. Field map is going to just fill up wherever the presence needs to be located. We can definitely go for tool maps over here, and we can say that let's put sales in tool maps. I'm not saying tool maps, it's tool tips. I'll say let's put sales into tool tips. Now tool tips is nothing but once you hover on it, whatever comes on this white rectangle, that is tool tip. So you can see that state is Nevada, market is West, and the sum of sales which I put in as tooltip, I can easily see that which for every state I can get the sum of sales here, right? And the way it is, it's not giving me a very effective diagram over here. Bada maza nahi aa raha itna. But if I convert this into maps, at times field map is very nice, but I think I would always prefer a map over a field map. Field map is just able to show that where are you doing your business. आपका business कहाँ कहाँ पर चल रहा है. Okay, and of course we can always go into this thing. We can always go into map settings over here. We can also always go into legend, and यहाँ पर we can definitely format over here, right? For example, I say that let's put legend into center right.
Oops, not center, right? I'll top center. Top center. I think I meant top center, right? So this is how the map diagram will look like. Now, if I convert this particular part into a map one, let me click on this. It's a table. I'll just, right now it's a table. I'll convert this into a map. Okay. And map says, the map comes over with an advantage of something from field map. इसका कुछ advantage है field map से. What is that advantage? We'll see that. फिलहाल तो let's put the location over here. What kind of location do you want? I want the location to be state. So it is going to represent all the state over here with bubbles. So unlike filled map where all the states are filled over here, it's going to put represent all the states with bubbles. And here comes my advantage, that I can vary the bubble size based on a certain parameter. That is, if I take, let's say, sales and put it on this thing. See, legend will take care of it later on. Latitude and longitude, you don't have to worry about it because we use maps over here. Now I'll go for, if I put sales into bubble size, then we can see that these are all the bubbles now are of different size. All the bubbles now are of different size. हर अलग अलग साइज का बबल है आपका यहाँ पर. ओके. So now the size of the bubble is directly proportional to the sales that particular state is doing, which means that I can easily identify which are my top states over here. For example, I can easily identify California, I can easily identify Illinois, I can easily identify Ottawa, and then uske baad kaun sa aa raha hai bhai? That's it. Yeah, these are the states which are doing very well in terms of sales, and these are doing very well in terms of sum of sales. People might say that, sir, yeah, if I click on this drop down, I might convert this into average. Then in that case, it gets converted into an average sales over here. Right? We can play around. Okay. Now I do not want in terms of sales. I want it in terms of profit. Then profit rakha to now the chart is giving you profit wise bifurcation over here. Profit wise bifurcation, or no, not exactly bifurcation. Profit wise, I should call it allocation of size to the bubbles over here. The bigger the bubble, the higher the profit that particular state is making. It becomes slightly easy to observe. That I can easily observe that these are the states in which I'm doing my business. And California, Colorado, Illinois, Iowa, New York, and Massachusetts are the states which are doing well when it comes to states. New Mexico, we need to focus on it. Missouri, we need to focus on, perhaps. We need to focus on whatever the state. New Hampshire, we probably need to focus on a few more over here in which, Utah as well. We can Oregon, Washington. Washington being a big state still is not doing a very good business over there. Right? All that kind of, stuff we can talk about over here. Okay. Now, apart from this, we can give it legends as well. What do you mean by legend? Legend means I categorize these points into various categories based on whatever variable, whatever feature you put in over here. That is, if I go for market, what a market? How many markets are there? If I just look at it, how many markets are there? The markets are central, east, south, and west. The markets are central, east, south, and west. Okay. I'll just increase the display size, guys. I think I just received an message कि थोड़ा सा display size बढ़ा लीजिए. मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं. I think it's just 125 right now. Let me make it 150. Oops. Okay. Yeah, I think it anyways is okay over here, right? So I think I'll go back to 125 on second thoughts. Thank you. Right, so I can see that there is central, east, south, and western states over here. Right? Now, what I want is I want to put them into various categories. Now, if I take market and put it up on legend, it's going to categorize every dot over here into
whatever is input inside market. How many types of markets are there? Central, east, south, and west. Right, that's what it has done over here. So it has basic legend, means it's going to give you bifurcation over there. So you can see that uh, these are all eastern one, western one, this is central, this is southern, and this is eastern states over here. Okay, right. So with color I can identify three dimensionally. I can see things over here. One, in which state are we doing business? Second, how much of the profit am I making in which state? Okay, I can do that. Okay, and then finally I'm looking at the color in which I can say that which state belongs to which type of market. Okay, this is what we can basically do, right? We can go for sum of profit, we can go for total expenses, anything can be seen over here. If I look at the total expenses, these are the total expenses over here. If I look at let's say anything else, who is going for the best margin over here, we can see the sum of margin. Although I'm more interested in average margin doesn't move either, right? So whatever I want to analyze, I can definitely analyze over here using this. That's the idea of this kind of chart. Okay, now we can also format it, because right now with the expanded version it was doing it was looking really nice. Okay, but if I just go to back to report, I'm not looking at it that well. I think this is better, slightly more compressed over here, but once I do it, no, it compresses very fast. Let me try and put it up. Again, it has done it. I'm not sure why that plus and minus sign, which used to help me, is not coming up in the additional formats. But that's okay. I can. Whoa. Right. Something like this can be done. You know? Now, not only I can do that, right? I can compress the figure over here. Right. I can compress the figure. You can see the figure adjusting here. Right, so I think this is something which is well decent enough. We can go over here, we can go for map settings, we can go for many styles of the map over here. I'll take you guys again to the focus mode. Right, we can take to many styles. For example, the style that we are looking at right now is road. We can make it aerial. It looks something like this. We can make it dark. Look something like this. The images are popping up very. I can say show labels. Show labels can be switched off. Okay, right. Show labels can be switched off or it can switched on. Can you just see what happens once we switch off the show labels? देखिए शो लेबल्स को अगर मैंने ऑफ करा तो पीछे का जो लेबल्स दे रहा था ना स्टेट का, वो नहीं चला, वो चला गया मेरा. सो इट डिपेंड्स. आई मीन इफ माय क्लाइंट हु इज लुकिंग एट दिस, अगर उसको पता है कि कौन सा स्टेट कहां पर है, कौन सा स्टेट कहां पर है, तो बट अगर मैं किसी जैसे इंडियन क्लाइंट के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इंडियन को ज्यादा नहीं पता कि कौन सा स्टेट का लोकेशन कौन सा है ना. So in that case, I would like to go for the so that you can read you can also read the states in what we are talking about over here. Or you can do something like this. You can switch it off. You can go to category labels and switch it on. That way, I can see which state are we doing the business. Right. This is what we have. So yeah, we can reduce the font of the category label and all that kind of stuff can be done here. Right, so I'll just switch off the category labels and say that let's show the labels over here. Dark ke baad we can move on to light theme over here as well. Grayscale. This is my grayscale. And finally, we have something called as road. जिस पे हम पहले थे. I think I like kind of like dark. Sorry, light over here. Okay, so light is slightly better. I can go to general. In fact, I can go to visual. Keep on myself on visual.
And legends, I say that don't go for top left, go for top center. That way I think it looks slightly more symmetric, it looks better. Okay, we can format the text over here, the central, east, south, and west. We can format this as well. Okay, and now the one of the important portions in map is something called as bubbles. Now, if you look at bubbles, बबल का स्केलिंग किस हिसाब से होगा ये चीज यहां पर बता रहा है. What is the how are we going to scale the bubble? That is how big the bubble is. One is the one way of scaling is auto. The second one is data range. Okay, we can then play around with the numbers over here. Okay, if I just reduce it down, we can see that all of them are very low, right? We can keep on increasing it. We can see that, okay, the numbers are slightly more identifiable over here. If I keep on increasing it, it'll keep on increasing. I think this is how much I can probably afford, right? Without having a lot of intersecting circles, because now I can see California, Colorado, Illinois. In fact, I can easily make comparison over here among these states. I think that is a better way of looking at it. Okay, we can always look into colors as well. Colors भी देख सकते हैं. You want to go for a different color, you can go for a different color. If I recall, I think blue की जगह पर we'll take a black. I think this is something that they've taken, right? And I think I'll go for, instead of this, I'll go for an orangish kind of color, and instead of this, I'll go for a, nah, I think a darker version of this color, something like this, right? So that's how it is. This is what we do. This is map chart. You can see what you're seeing on the screen right now are two different kind of charts which uses location to pinpoint data on map. And I think everybody, almost everybody, uses location level data at least once in a while. Okay, एक बार तो यूज करेगा ही करेगा कभी ना कभी वो, है ना. वंस इन, लेट्स से अ वीक, एनी रिपोर्ट, you need to have location in it. Okay, all right, one last thing is left, which is called a slicer. So I'll just go for that. And I think if I just click on this, in fact, why to click on this, I'll just copy one of the charts, put it up over here, compress it, and just click on this chart and click on slicer. That way the chart automatically gets converted into slicer. And here I'm looking at slicer of all the states, because it was initially all the states over here ना, यही चीज मैंने कॉपी करी यहाँ पर. But I'll say that I do not want the states. I probably want the product type. Let me try and put it up over here. I'll go for product type. Okay, these are my product type over here. These are my product type. Now, if you look at it, we can still, now as you can see, the slicer are, if I just go for coffee, the data will be only for coffee. If you look at espresso, the data will only for espresso. If I click on herbal tea, all the charts over here will display the data of only herbal tea. Similarly, if I click on tea, the entire chart is going to display the data of only tea, right? The data. So basically, what slicer is doing is acting as a filter over here, as a high level filter in Power BI. Okay, and we can then look into managing this as well. For example, if I just click on this, I can go to slicer setting. I can say that single select on hai, let me off it. Once I single select off, I can select multiple items over here. For example, coffee and espresso can be selected together. Okay, now then if I look at shape, it's rectangle. We can go for rounded rectangle. It looks like rounded rectangle. The shape of the tabs over here, right? We can give it multiple shape, but I think a rectangle sounds, I mean, looks good. Okay, we can go to the layout over here, and we can have the maximum rows shown and maximum column shown over here as well. For example, if I could just include the column by 4, that way what happens is it'll give you maximum column 4, that is 4 columns can be put in over here. That way you make, you optimize the
space that you want to use over here. Okay, now you can easily put the slicer here, and we can do this. So yeah, guys, these are slicer. We can go to call out value, we can go for off, or we can then you know look at call out values over here, right? I can make it bold, right? Right, a display unit, I don't need to fix it. I think this is it. Right, then we can go to general, and then we can change the price, and we can sorry, change the title, and we can be smart over here inputting the title. For example, select a product type to filter data. Let me see. Select a product type to filter data, ये पूरा ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं I'll just reduce the font size a bit so that it looks slightly different. Select a product type to filter data. It's something that I'll just put it up, and the user will come, click on this, and it's going to see the coffee, espresso, herbal tea, and so on like this. This is how it will, go for. Okay. Right, guys. So I think, yeah, this is what I wanted to discuss with you people. And I think we have, at a basic level, we have seen all possible kind of charts. Now, whatever is going to come up, it's going to come up for now. I think we'll move on to the next part, which is your query editor, in which I'll have to talk about DAX. One, I'll have to talk about query editor, and then I'll definitely talk about DAX over here. Okay. Right, guys. So I think we'll end the session over here, and I'll just save the sheet. I'll ensure that you guys get the data over here, right? Because I think I've used coffee store data just to explain few points over here. But yeah, we've moved a long way, basically from taking data from internet to using a very good data set over here. All right, guys. So I think, yeah, if you have any doubts, I'll be there in the session for the next 30-35 seconds, or probably a minute or so. So please put in your doubt if you have any. Otherwise, we can call it a day, and we can say that we can close this session now. Right, let me see whether we can, put this decomposition over there. Control X. Let me try and put it up over here. Fit हो रहा है क्या ये? Yeah, we can do it. Fair enough. Right. So I think we don't need decomposition over here. We can see all the charts here only in map. Okay. Right, guys. I think this is where we excuse me. This is where we part our ways, and let's meet on Tuesday. And on Tuesday, we'll start with query editor, that is data pre-processing and cleaning. That's what we'll start with. All right, guys. Chali. Yes, Pradyumna, key influencer. What? You want to say something? Let me know. Okay. See, key influencer is simply nothing but once you click on the chart over here, you understand. See, it says I'm analyzing a certain data. I'm analyzing a certain quantity, and I want to explain it by these are all the quantities that I've taken over here. What key influencer does is it finds out which of these explain by quantities is affecting the analyzed quantity the most. That's AI, right? That's the AI part of Power BI. So it says that is it number of ratings? Is it average rating? Is it average battery life? Is it camera front, average camera rear camera, or average discount, or average expandable memory, average RAM? Which one is the most important one for deciding what the offer price?
All I need to do is to just put the variables over here and run it. Right now, it says what influences offer price to increase. I'll say when average of front camera is 8 to 12. Whenever average of front camera is 8 to 12 megapixel, the average of the offer price increases by 40.02. तो फ्रंट कैमरा जो ना काफी काम की चीज है, फ्रंट कैमरा के हिसाब से प्राइस काफी ऊंचा जा रहा है. दैट इज समथिंग that we need to look into. If the average of battery is 4500 or less, I can see that the average price is this. Now if the battery size is above, the average price is not high. मतलब बैटरी और बैटरी की कैपेसिटी और बढ़ाने से प्राइस बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है. कस्टमर विल पे मोर प्राइस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर. Similarly, this is what key influencers are doing. We've done a detailed discussion on key influencers yesterday. बराबर आधा घंटा आप लोगों ने डिस्कस करा हुआ है इसके ऊपर. If you have missed the class, I request you to go and watch that link, and I think you'll be able to gain a lot of insights from there as well. Okay. All right, guys. So if we have any further doubts on this, similarly, what I did was I brought two influencers, one for sales, the other one for, I think this is for price and this is for the quantity sold. Right. This time today, I'll share this Power BI X file with you because I think now today you need it. Yeah. All right, guys. So that's great. Let's end the stream over here. Let me stop the screen share. And this is where we part ways for today. Next time we'll meet on Tuesday, as this is a TTF case. Next time we'll meet on Tuesday, and Tuesday we'll continue a discussion on how can we, how can we pre-process the data slightly better with Power BI. Okay. See you guys on Tuesday. Bye bye.